Okay, so today I'm going to teach you respiration topic, which is a little bit trickier. But if you get the concept of respiration, it will be the most beautiful topic you have ever understood. Okay, let's have that topic. ठीक है, तो respiration को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. मैं respiration को थोड़ा सा अलग. We'll be studying some basic concepts which will be leading this respiration topic much easier. Okay. So let's first write this topic. Respiration in lungs. Okay, since we are studying biology, so we should know what are the basic characters of living being. तो हम respiration को एक basic character में भी मानते हैं कि living being का एक basic character जो है वो respiration होता है. तो पहली चीज है कि respiration होता क्या है. हमें ये बताना चाहिए कि living being में एक अच्छा authentic characteristics में respiration भी आता है. तो respiration का role क्या है living being में. पहली चीज है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग बीइंग है उनके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. उन सारे केमिकल रिएक्शंस को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो लाइफ प्रोसेस ही रेस्पिरेशन है. तो व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, हाउ दिस रेस्पिरेशन creates energy for all the living processes and how it is done in many steps, what are the signs of respiration and how it is carried in different kind of organisms. So let's study that. First we have to study some basic concepts leading to respiration. These basic concepts will be helping you to get this topic much easier, in much easier way. Okay, so what is the first basic concept? तो पहला एक concept है कि respiration जो है वो energy deriving process है. हम simple means में what is the general sense of respiration? Respiration एक energy deriving process है और जो कि energy कैसे create करेगा by breaking down the biomolecules which we got in digestion process. डायजेशन में हम जब सिंपल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में जोड़ देते हैं, उसके बाद ये सिंपल मॉलिक्यूल्स ब्लड की हेल्प से ट्रेवल होके हर बॉडी पार्ट्स तक जाता है. तो वहां पर ये फर्दर बायोमॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं. उनको बायोमॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेक डाउन किया जाता है एंड देन देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी. तो हम ये चीज पहले पढ़ेंगे. जितने भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जितने भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, दे हेल्प इन रिलीज ऑफ एनर्जी. And we know that in respiration we break down the biomolecules that leads to energy formation. So, in general sense we know respiration in general sense relates with catabolic reactions. So, it says breakdown of biomolecules leads to release or formation of energy. Okay, then there is a second concept. So all living kingdoms are running on the basis of energy. So second concept that we will in this topic, energy cannot be created and then energy cannot be destroyed. Neither be created nor be destroyed. So it can be transformed from one form to another form. So how it is going to make this topic easier? हमें पहले ये लिखना पड़ेगा. Energy cannot be created. Energy neither be created nor be destroyed. But it can be changed. But it can be transformed. Okay. So हमें यहाँ से क्या समझना है कि हमारे अंदर लिविंग बीइंग के अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो यूज होती है. तो हमारे अंदर यूज होती है केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज एटीपी. सो एनर्जी यूटिलाइज्ड एनर्जी फ्रॉम इनसाइड लिविंग बीइंग और यूटिलाइज्ड एनर्जी बीइंग इज केमिकल फॉर्म. एंड दिस केमिकल फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन. केमिकल एनर्जी, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. There is the form of ATP and there is a presence of phosphate and it is also called as phosphorylation. Formation of chemical energy. Formation of chemical energy also called as phosphorylation.
ओके, सो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी में नीड है हर एक केमिकल को करने के लिए। दूसरी चीज, तो कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर यूज होता है, दैट इज केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इज जस्ट द एटीपी, एंड देयर इज a molecule of phosphate, and that's why this process of formation of chemical energy also called as phosphorylation. तो हमें ये पता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर phosphorylation होगा तो कौन से मेथड से होगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन से होगा. So there are two pathways by which we get enormous amount of energy, and there are two pathways, two sources by which we get more amount of phosphorylation. So based on that, we have two types of phosphorylation. One in the presence of oxygen and the other one in the presence of light. Okay, so this is also called as oxidative phosphorylation, because this creation of ATP is just because of the breakdown in the presence of O2. So this is also called as oxidative phosphorylation, and it occurs in the presence of light. So this is also called as photosphorylation. So it is called as photophosphorylation and it is called as oxidative phosphorylation. So when it occurs, oxidative phosphorylation हम respiration के अंदर पढ़ते हैं, which occurs in every organism. But photophosphorylation हमेशा हम plants में करते हैं, because light is shed by plants in the presence of chlorophyll pigment. So now we need to another concept. So there are two concepts. First concept was energy cannot be we have studied energy cannot be created, cannot be destroyed, and the last one we have studied is कि energy will be always created by catabolic reactions. So phosphorylation occurs when the catabolic reaction occurs, and it can be done in large amount. The phosphorylation process can be done in large amount in the presence of two products, two sources, that is light and oxygen. Okay, so now we need to be another steps of respiration. पहली चीज हम जो जनरल सेंस में हम जो कंफ्यूज होते हैं वो जनरली हम ब्रीदिंग प्रोसेस से होते हैं. बच्चे ज्यादातर रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग से रिलेट करते हैं. ओके, सो ब्रीदिंग से रिलेट करने का मतलब क्या है? ब्रीदिंग एक्चुअली में रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप पाथवे जिसमें हम ब्रीदिंग को फर्स्ट स्टेप में रखते हैं. तो ब्रीदिंग से सिग्निफिकेंस क्या है? ब्रीदिंग हमें क्या हेल्प करता है? ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में कैसे रोल प्ले आउट करता है? Breathing in actual sense says exchange of gases. And what are those gases? These are two types of gases. One is O2 and the other one is CO2. O2 is beneficial for us and CO2 is suffocating. So it should be released out. It is exhaled and it is inhaled. So why it is useful? As we have studied, O2 is used to break down the molecules, and we have already studying the respiration process, which is actually break down the molecules, live molecules. So O2 is ultimately going to break down the biomolecules. Okay. तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोमोलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं, that leads to high amount of energy. Okay, so breathing के अंदर ब्रीदिंग में हमने पढ़ा कि O2 और CO2 जो है वो एक्सचेंज होता है, और हमें पता है कि यूकैरियोट्स के अंदर जो मोस्ट स्टेबल ऑर्गेनिज्म है, दैट इज बैक्टीरिया, दे हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स फॉर कैरिंग आउट देयर ब्रीदिंग प्रोसेस. बट इन प्लांट्स देयर आर नो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, बट दे हैव सम सेल्स व्हिच आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड दे कैन सिंपली डू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. So what is the criteria? So breathing in animals and breathing in plants. Okay, so breathing in animals has specialized structures to perform the exchange of gases. But in plants, they do not have specialized structures or specialized systems.
they have complete respiratory system, but here there is no such thing. Different animals have different structures organized, but in plants we have some structures like lenticels and stomata. These are opening of plants which is in direct contact with the environment. In direct contact with the environment and leads to exchanger and to perform exchanger cases. And they do not put higher demands for breathing process or respiration process because they are already a good supply of food. Okay. So now we are going to study. Okay, now we are going to study the cellular respiration. तो हमें ये पता होना चाहिए कि respiration क्या है, वो phosphorylation करवाएगा, metabolization से करवाएगा. So what is that machinery which is going to actually helping in creation of ATP? That machinery is ETC. Machinery of respiration. ETC or electron transport chain. Chain or system. Okay, so this machinery works on the principle of electron transport. So there are several complexes. So electron transport chain, ETC. So ETC composed of several complexes. So it is composed of several complexes. ETC is a machinery in which there are several complexes which actually transport electrons from one carrier to another carrier, and while transporting the electrons they deliver the protons from one side to another side. तो इसमें several complexes से बना होता है जो सारे complexes हैं, and every complex is electron carrier except one ubiquinone which accepts both, except electron as well as protons too. So in the system we have 5 complexes, and within the 5 complexes the last complex is ATP synthase. And how is this mechanism carried out? When the electron transport from electron are passed on from one carrier to another carrier or another complex. जब एक इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स से दूसरे इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा तो उसी टाइम पर ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे तभी एक प्रोटॉन जो है वो एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसपोर्ट होगा. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे जब हम यही प्रोसेस हम थैलेमोइड मेम्ब्रेन में पढ़ते हैं, और ये हम रेस्पिरेशनल प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये मशीनरी होती है, दैट इज ईटीसी होता है, और वो प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से आउटर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में छोड़ता है, एंड देन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से जब वापस वो मैट्रिक्स में डालता है तब एटीपी सिंथेसिस से होके जाता है, एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन. So then there is a formation of ATP synthase के अंदर ATP already रहता है, जब इसके अंदर से प्रोटॉन्स पास होते हैं तो there is a conformation change in which ATP is added with the IP, and then there is a formation of ATP. So let's rewrite that. Electrons are passed from one carrier to another carrier complex and simultaneously transport the protons according to gradient across the surface. When there is a proton, when protons are transported are passed from ATP synthase, then there is a configuration change. And that time there is a ADP in ATP
ADP, there's an addition of IP which leads to formation of ADP. So here's the pathway by which, or machinery by which ATP phosphorylation takes place. Phosphorylation takes place. तो ये ऐसे कैसे हुआ? एक्चुअली इनके अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो जब भी कोई चीज टूटती है तब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों ही क्रिएट होते हैं. तो हम मशीन रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे, बहुत जगह पर ये ब्रेकडाउन रिएक्शन होता है और उन सारे साइट्स पे ब्रेकडाउन रिएक्शन होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इंटरमीडिएट्स and those energy intermediates are brought to the matrix and then they are transferred to ETC machinery. So ETC machinery is there in mitochondria matrix, and in mitochondria matrix, so ETC is going to create ATP. So mitochondria matrix, in mitochondria matrix, all the energy intermediates like what all the energy intermediates? We have three types of energy intermediates. First one is NADPH2, second is FADH2, and the third one is GDP. So these are three different types of energy intermediates which are released in the matrix also, and it is the one which is released at different sites. So it is released in glycolysis process जो हम पढ़ेंगे, and it is also released in link reaction. So these all are link reaction already taking place in the matrix. So these all energy intermediates are present inside the matrix only, and glycolysis energy reaction is further brought to the matrix, and these energy intermediates further are processed inside the machinery. Which forms the energy. So these are the basic concepts जिनके ऊपर हम पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे.